स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है राजेश? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इस टाइम पे क्लास देख रहे हो। फर्स्टली टेल मी, एम आई ऑडिबल और नॉट? Okay. In our previous classes, we discussed that branches of agriculture. After that, we discussed first of all agriculture, then branches of agriculture, then crop classification. Agriculture and its branches, crop classification. Our next topic is cropping system. For starting this lecture, we need to learn 2 or 3 terms related to cropping system. After that, we will start our class. First of all, try to write down, जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे जो है तो लिखते जाना। क्या है? फर्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न, नेक्स्ट वन इज क्रॉपिंग scheme, third one is cropping system, and the last one is farming system. In our previous class, we discussed that there is mainly a 3 season. If we classify the crop based on season, there is mainly a 3 season, that is Kharif, Rabi and Zaid. Kharif, Rabi and Zaid. So examples of Kharif crops are paddy, maize, cotton, millets, sorghum, soybean are the example of Kharif. Rabi crops are like wheat, barley, mustard, oats, gram. Gram means चने. Zaid, short duration crop जो भी है, कोई भी short duration crop, like watermelon, cucumber, moong, these are all the example of Kharif, Rabi and Zaid season crops. In cropping pattern, how we grow these crops? Based on time or special arrangement. कैसे हम जो है उसको अरेंज कर रहे हैं? That means cropping pattern is just a arrangement of crops. How we arrange the crops in our land in a proper way or proper pattern. So it is basically a pattern of crops. Pattern of crops mean from, suppose on 10 June we grow a nursery and we transplanted the rice crop, transplanted the paddy crop in our field. So in June we grow paddy crop, and paddy crop will harvested after nearly 4 to 5 months. So harvesting October, in October paddy crop जो है harvest कर. After that we grow wheat crop on 20th of November, suppose. So our cropping pattern will be paddy or wheat, paddy or wheat, paddy or wheat. Very good evening. Very. And इंडिया के अंदर
सबसे ज्यादा जो क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है वो है पैडी और व्हीट, सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मीन्स टू से हाउ वी अरेंज द क्रॉप ऑन आवर लैंड, दैट इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न। So paddy wheat, suppose if we grow maize, in case of maize and wheat, so our cropping pattern will be maize and wheat. If we grow maize, potato, wheat, so our cropping pattern will be maize, potato, wheat. This is all about cropping pattern. Next one is cropping scheme. What is cropping scheme? What is cropping scheme? How we arrange different plots, roads and building, how we arrange our infrastructure, cropping pattern, our irrigation channel, our crop pattern. And suppose we have field, in that plot we grow wheat. Here is the irrigation channel. Here is the irrigation channel. After that इसको लिखते हैं IC, irrigation channel. और इधर है हमारी बार पे, इधर हमने जो है फार्म हाउस बना रखा है। Here's our farm house, and on that plot mustard, wheat, irrigation channel IC. This is road. So basically a cropping scheme is just a mapping of our proper infrastructure of crop pattern. और ये है क्या, ये एक प्रॉपर मैप है जिसमें ये पता चलेगा कि कौन से प्लॉट में, कौन से जमीन पे, कौन सी लैंड पे हमने किस तरह का जो है क्रॉप लगा रखी है, किस लैंड पे हमने जो है हमारे रोड है, किस टाइप की हमारी जो है इरिगेशन चैनल है, वो इस सबको क्या बोल देते हैं, क्रॉपिंग स्कीम। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो है हम ये पढ़ेंगे उसका क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम, जो आज का आपका जो है टॉपिक है। तो आज का आपका टॉपिक है दैट इज क्रॉपिंग सिस्टम। व्हाट इज क्रॉपिंग सिस्टम? तो बेसिकली फ्रॉम क्रॉपिंग पैटर्न वी यूज mostly paddy and wheat. In most of the areas we use paddy wheat cropping pattern. How is that possible? Because of our resources. Because of our resources we are using paddy wheat. For example, in Rajasthan, due to hot climate, in Kharif season fallow means khali. We grow nothing. Farmers grow nothing in Kharif season and in Rabi because of lack of resources. Second reason is climate. Third reason is irrigation. And fourth reason is rainfall. So they don't grow any crop in Kharif season, but in Rabi they grow mustard or oats or barley. So in that case, cropping pattern is fallow and mustard. Fallow and mustard. Because of lack of resources. So in that case, we take one crop in 1 year. So arrangement of crops or growing of crops according to our resources and pattern and special arrangement of crop is known as cropping system. So in that case, if we grow one crop, that is monocropping. If we grow two crops, that is
different, how we are arranging the crops with the different crops, like in same season. If we grow different crops in same season, that is different cropping system. But if we grow different crops in different season, that is also a different cropping system. We will discuss in this. So according to resources, arrangement of crops or cropping pattern based on the resources, how we are utilizing our resources and how we select our cropping pattern, that is known as cropping system in layman language, in simple language. सबसे सिंपल क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, हम उसको कैसे जो है यूटिलाइज करके अपना क्रॉपिंग पैटर्न बनाएंगे. बिकॉज ऑफ दैट रिसोर्सेज हम बार बार वही करते आ रहे हैं. बार बार हम, अगर हम मान लो राइस वीट लगा रहे हैं, पैडी वीट लगा रहे हैं, तो वी आर growing again and again paddy wheat. In that case, now it's our cropping pattern, but बार बार वो फॉलो हो रहा है, तो वो कब क्या बन चुका है, वो अब एक हमारा सिस्टम बन चुका है. तो उसी को बोलेंगे हम क्रॉपिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज फार्मिंग सिस्टम. फार्मिंग सिस्टम इज बेसिकली अ relationship between different enterprises related to agriculture. Clear? So it is basically a relationship between different enterprises related to agriculture. We will discuss in our next lecture that what is farming system, what are the type of farming system, what is type of farming system, and what are the system of farming in India, mostly adopted in India. So in today's lecture we are going to discuss what is cropping system. This is system approach what is applied in agriculture for efficient utilization of all resources. How we are utilizing our resources. Based on our resources, we used cropping pattern according to our resources, according to our land availability. So in that case, we are using same pattern again and again. That become our system for our entire area. Clear? मान लो हमारे जो है अभी ऐसे सिंपल सी बात, हरियाणा में जो है पैटर्न चलता आ रहा है पैडी वीट का, बिकॉज वहां पर इरिगेशन वाटर की अवेलेबिलिटी है, बिकॉज वहां पर जो है क्लाइमेट सूट कर रहा है, रिसोर्सेज पूरे के पूरे उसी पे जा रहे हैं, तो बार बार वहां पर पैडी वीट चल रहा है. तो वहां पर क्या है, अब वो सिस्टम बन चुका है. तो remember the one thing, that efficient utilization of all resources or according to our resources we use cropping pattern again and again. That become our system, that is known as cropping system. In easy language. Clear? Next, what is farming system? As I told you earlier, that a set of various element or various component or relationship of different enterprises or different components related to agriculture. For example, relation of crops to poultry. I am telling you only one example of farming system. Type of farming system are, first one is specialized farming. What is specialized farming? If we are growing crops or we have more than one or two enterprises, like we are growing crops on our field and we are also acquire livestock for milk production. But if crop is giving us more than 50% of revenue return, that means हमारी जो है 1 लाख इनकम है, दोनों से 1 लाख इनकम हुई है, और हमारी जो है 60,000 की इनकम जो है वो क्रॉप से हो रही है. Crops are giving 60,000 of income and livestock are giving 40,000 of income. So if our income from one enterprise is greater than 50%,
then it is known as specialized farming. So basically it is a relation of different components of agriculture or different enterprises of agriculture, like relationship between crops, animal husbandry, apiculture, sericulture, poultry, all the branches of agriculture, as we discussed in our first lecture. It is basically a relationship of different branches of agriculture and how we are generating income from that. That is known as farming system. Example is mixed farming. Mixed farming is also a type of farming system. Type of farming system means to say, if we are growing crops, ये क्वेश्चन आ रखा है भाई, if we are growing crops and we have livestock, we are not talking about any income or any resources, that how we are generating income from our different enterprises, but we talk about that if we are growing crops and livestock together and rearing some animals for that are interrelated to each other, this type of farming is known as mixed farming. This type of farming is known as mixed farming. You can write down. Clear? Farming on the particular farm, which include crop production, raising livestock, poultry, fishery, beekeeping, to sustain and satisfy need of farmer as possible. That means mixed farming is that kind of farming which is sustained and used to satisfy the needs of the farmer as possible. So it is basically a type of farming system, nothing else. We will discuss in our type of farming system, what is farming system in detail, but our today lecture is on what is cropping system and types of cropping system. Cropping system means the proportion of an area under various crops at a point of time in a unit area. Proportion of an area under various crop at the point of time in a unit area. इसको सिंपल भाषा में समझो कि एक हमारा जो एरिया है उसमें कौन कौन सी क्रॉप लगा रखी है. इट इज अ ईयरली सीक्वेंस, मतलब यहां पर जो है खरीफ में क्या लगा था, यहाँ पर रबी में क्या लगा है, यहाँ पर खरीफ और रबी में क्या लग रहा है, यहाँ पर रबी और खरीफ में क्या लग रहा है. तो इट इज बेसिकली अ ईयरली सीक्वेंस और स्पेशल अरेंजमेंट. स्पेशल मतलब स्पेस, रिगार्डिंग टू स्पेस. एक स्पेस पे हम जो है क्रॉप्स को अरेंज कैसे कर रहे हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, अकॉर्डिंग टू अवर रिसोर्सेस, because there is a little bit difference in definition of cropping pattern and cropping system. In cropping system, if we use the word resources, then it is definitely a cropping system. So in India सबसे ज्यादा जो क्रॉपिंग पैटर्न चलता है वो क्या है, पैडी और वीट. देखो वो पैडी और वीट बार बार चलता है या फिर कोई भी पैटर्न जो चलता आ रहा है, ठीक है. एक टाइप अभी हम पढ़ेंगे, उसमें क्या है, मान लो राजस्थान की हमने बात करी, राजस्थान में रिसोर्सेज जो हैं अभी हमने बात करी ना, फैलो और मस्टर्ड, फैलो एंड मस्टर्ड. So it is a cropping pattern. It is a cropping pattern, fallow and mustard. But we grow one crop in 1 year. We grow one crop in 1 year because of our resources or availability of that resources. So in that case, it is a cropping system. Let's mix it. Fallow and mustard. This is a cropping pattern. Cropping pattern. एक पैटर्न है हमारा. But we are growing only one crop in 1 year. So that is monocropping. That is monocropping. So monocropping is a type of cropping system. Type of cropping system. And fallow mustard or paddy wheat, paddy mustard, these all are the types of cropping pattern. Please write down. What are the characteristics of cropping system? Component of farming system. So what is the difference between farming and cropping?
What is the difference between farming and cropping? See, if you are growing crops, you are farmer or you are included in cropping system and cropping pattern. तो आप क्रॉप लगा रहे हो तो आप क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सिस्टम यूज करोगे. बट जो भी एंटरप्राइजेस एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हैं बट क्रॉप्स नहीं हैं, उसको हम फार्मिंग भी बोल देते हैं. तो बेसिकली फार्मिंग के अंदर क्रॉप्स आएगा, क्रॉपिंग के अंदर फार्मिंग नहीं आएगा. तो फार्मिंग इज अ ब्रॉड टर्म in which cropping is a type of farming. Cropping is a type of farming or component of farming. So it is basically a interact with all the available farm resources. As I told you earlier, it is basically interaction of all the available resources on the field or in a specific area. That is interaction with all the available farm resource. Examples are wheat, rice, cotton, groundnut. How all the crops, if we are in farming system, we discuss that how all the enterprises in farming system related to each other. But in cropping system, how different crops interact with each other with available resources, available farm resources. That is known as cropping system. You can write down. Moving forward, types of cropping system, most important. What are the different type of cropping system? Cropping system is mainly divided into three classification. That is, first one is monocropping, second one is multiple cropping, and third one is contingency cropping. There is one more, that is fallow cropping. Clear? So basically there is a three classification in, or there is basically a three type of cropping system used in India. First one is monocropping, second one is multiple cropping. In multiple cropping इसकी सब टाइप है आगे क्या क्या है. फर्स्ट वन इज सीक्वेंस क्रॉपिंग. एज द नेम सजेस्ट, इन सीक्वेंस के अंदर मिक्स क्रॉपिंग, एज द नेम सजेस्टेड, बाय मिक्सिंग, गोइंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मिक्सिंग द सीड, दैट इज मिक्स क्रॉपिंग. नेक्स्ट वन इज इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग में क्या है कि दो क्रॉप्स एक ही एरिया पे दो क्रॉप्स हमने लगा रखी हैं, दैट इज इंटरक्रॉपिंग. विल डिस्कस इन आवर फर्दर लेक्चर. इन सीक्वेंस क्रॉपिंग देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स, दैट इज ratoon, relay, parallel, or in intercropping there is a parallel, companion, multi-story, synergetic. Clear? So basically there is a three cropping system in India, that is first one is monocropping, second one is multiple cropping, and third one is contingency cropping, or fourth one is fallow cropping. But in monocropping, as the name suggests, mono means one, cropping means crop, one crop in 1 year, that is known as monocropping because of lack of resources. कौन करना चाहता है कि एक साल में एक ही फसल है? कौन सा फार्मर चाहता है? कोई आलसी नहीं है, तो वैसे फार्मर आलसी होते भी नहीं है, बट कौन सा फार्मर चाहता है कि मैं एक साल में एक ही क्रॉप लूं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से अब उसको मोनोक्रॉपिंग करनी पड़ रही है, तो दैट इज मोनोक्रॉपिंग. मल्टीपल में एक से ज्यादा क्रॉप, दो हो सकती है, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, तो दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. व्हाट इज कंटिजेंसी क्रॉपिंग? इफ वी चेंज आवर पैटर्न, कोई भी वेदर कंडीशन की वजह से हम अपना क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो चेंज कर रहे हैं, दैट इज कंटिजेंसी क्रॉपिंग. फर्स्ट वन इज monocropping. First one is monocropping. Monocropping refers to growing only one crop on a piece of land. It may be due to climatological or socio-economical condition or due to specialization of farmer in growing particular crops. किसकी वजह से हो सकता है? First one is lack of resources. Second one is climate. Third one is soil. Fourth one is socio-economic impact. Fifth one is farmer is only specialized in growing of one crop. Like farmer only know how to grow paddy crop, they don't know how to grow wheat crop. There's a less chance of this type of farming. But monocropping is basically a growing only one crop on a piece of land.
there is a difference between monocropping and monoculture. For example, we are growing paddy crop, but after that we grow nothing, कुछ नहीं लगा रहे. In kharif season we grow paddy, and in rabi season it is fallow. In monoculture, that is an example of monocropping. Or in kharif season it is fallow, and in rabi season it is mustard. Quite possible, yes. In kharif season that is cropping pattern, and in rabi we are growing wheat. In kharif season we are growing red gram, but in rabi these are the cropping pattern or a type of monocropping. But in monoculture we grow same crop in 2 different season. एक ही साल के अंदर हम 2 या 2 से ज्यादा जो है क्रॉप लगाएंगे, बट वो क्रॉप सेम होगी. लाइक इन खरीफ and rabi. In kharif season we grow paddy crop, and in rabi we also grow paddy crop. So basically we are growing one crop, that is paddy. On kharif and rabi, that is monoculture. We are cultivating only one crop, that is monoculture. If somebody asks that paddy is not a rabi crop, so basically paddy is a kharif crop but can grow in 3 different seasons. Kharif, rabi, or as I told you, Os, Aman and Boro. So basically Boro rice is a rabi season crop, mostly grow in West Bengal area. So that's why production of paddy is सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है. So West Bengal is in first place in production of paddy or production of rice crop. What is the difference between monocropping and monoculture? Clear? Next type is multiple cropping. First type is monocropping. Next type is multiple cropping. Growing of 2 or more crops on a same piece of land in 1 year calendar is known as multiple cropping. एक से ज्यादा क्रॉप एक ही साल के अंदर लगाने को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग. क्लियर? इट इज अ intensification of cropping in time and space dimension means getting a greater number of crops from a single piece of land. देखो मोनोक्रॉपिंग के क्या जो है, पहले तो ये समझो मोनोक्रॉपिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं. एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? कन्वीनियंट है, इजी, एक ही क्रॉप लगानी है. एक फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस. इट इज कन्वीनियंट टू ग्रो ओनली वन क्रॉप, एंड एक ही क्रॉप लगाते जाएंगे तो हम क्या है उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे, तो स्पेशलाइजेशन फार्मिंग होगी हमारी. क्लियर? बट डिसएडवांटेज क्या है? बार बार अगर हम एक ही क्रॉप लगाते रहते हैं तो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बढ़ता है. एक ही क्रॉप लगाते रहेंगे, सोइल की फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी जो है डिक्रीज करती है. इफ वी यूज मोनोक्रॉपिंग एज अवर क्रॉपिंग सिस्टम, देन इट कॉज डिग्रेडेशन ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, soil fertility and soil productivity. It also impact on biodiversity of the region because we are growing only one crop. एक ही क्रॉप को बार बार लगा रहे हैं, तो दैट मींस जो दूसरी क्रॉप के, ऐसे समझ लो दूसरी क्रॉप की डिजीज है, पेस्ट है, वो आएंगे नहीं, तो बायोडाइवर्सिटी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज पेस्ट एंड वीड अटैक. ठीक, यहां पर मैंने पैडी लगा दी. खरीफ सीजन में मैंने पैडी लगा दिया एक फील्ड के अंदर. रबी में मैंने कुछ नहीं लगाया. अगले साल मैंने खरीफ में फिर से पैडी लगा दिया उसी में, इसी फील्ड के अंदर.
तो देयर आर सम सोइल बोर्न डिजीज, कुछ ऐसी डिजीज थी जो यहाँ पर इस फसल से मिट्टी के अंदर जाके बैठ गई। अगली बार हमने कुछ लगाया नहीं, अगली बार फिर से पैडी लगा दिया। बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल डिजीज और पेस्ट, ये पेस्ट को आदत है सिर्फ पैडी खाने की, बट इसको बार बार पैडी मिल रहा है। कुछ और फसल लगती है तो इसको कुछ खाने को नहीं मिलता, बट इसको पैडी मिल रहा है बार बार, तो इसलिए जो है ये डिजीज जो है या पेस्ट जो है फिर से आएगा। So that's how disease and pest attack increase in case of monocropping. But in multiple cropping में क्या है, हम growing of 2 or more crops on the same piece of land in 1 year है multiple cropping। इसमें क्या है, हम 2 क्रॉप लाइक पैडी, यहां पे लिख रहा हूं खरीफ, रबी, पैडी और वीट, ये क्रॉपिंग पैटर्न बता रहा हूं। पैडी वीट और पैडी वीट मूंग, नेक्स्ट वन इज कॉटन वीट मेज बार्ले वीट, बार्ले वीट में से कोई एक। तो दीज आर द टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। बट इन पंजाब मेज, पोटैटो, wheat, मूंग, it's also type of multiple cropping because they grow 4 crop in 1 year. Clear? So in multiple cropping there are different subtype of multiple cropping, that is first one is intercropping, second one is mixed cropping, and third one is sequential cropping। पहले थोड़ा सा ये समझो, देखो होता क्या है, सीक्वेंस का मतलब क्या है, we grow crop on 10th of July, we harvest paddy crop, twentieth of October, after that we grow wheat on 10th of November and harvested on 30th of April। So it is a sequence, it is in a sequence, sowing of one crop after harvesting of previous crop, sowing of one crop after harvesting of previous crop, it is in a sequence, so that's why it's called sequence multiple cropping। We can grow one crop, two crop like paddy wheat, we can grow 3 crops in sequence, we can grow 2 crops, we can grow 4 crops, so that is a type of sequence cropping, we can grow 2 crops in sequence, sowing of one crop after harvesting of another crop, it is a type of sequence cropping। In same way there is one, suppose we grow paddy on 20th of June, harvesting in 10th of November, but on 5th of November we broadcast wheat seed on the standing crop of paddy, means to say we sow the seed before the harvesting of one crop, so it is basically a overlapping system, it is a type of relay cropping, most important one, mostly linseed crop used as relay cropping, sowing of one crop before the harvesting of other। जब तक ये पैडी की फील्ड, मान लो पैडी की क्रॉप यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर जो है पैडी की है, उसके बीच में वीट के सीड है, जब तक ये वीट के सीड ग्रो करेंगे, इतने होंगे, तब तक ये पैडी की फसल यहाँ से हार्वेस्ट हो जाएगी।
Clear? So it is a relay cropping system, as in relay race, as in relay race. देखा होगा एक स्टिक पकड़ के बंदा भाग रहा होता है, ठीक है, तो दूसरा बंदा उस वहीं से स्टिक पकड़ के आगे चलता है, ठीक है, तो जब वो भाग रहा होता है तो दूसरा बंदा जो वहां पर खड़ा है, दूसरा पर्सन जो वहां पर खड़ा है, वो पहले ही उसको पकड़ने से पहले भागना शुरू कर देता है। रिले रेस देखना वही सेम सिस्टम है कि एक क्रॉप अभी तक खत्म भी नहीं हुई, हार्वेस्ट भी नहीं हुई, दूसरी क्रॉप की पहले सोइंग होगी, भागना पहले शुरू कर दिया। तो टाइम बचाने के लिए, रिसोर्सेज को बचाने के लिए, क्यों? क्योंकि पैडी के अंदर जो मॉइस्चर था वही मॉइस्चर सीड को मिल जाएगा, बार बार से पानी लगाने की जरूरत नहीं है, इरिगेशन हम कम करेंगे। सो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इट इज अ रिले क्रॉपिंग, इट इज अ रिले क्रॉपिंग। फर्स्ट वन इज मिक्स क्रॉपिंग, फर्स्ट वन इज मिक्स क्रॉपिंग from our multiple cropping system. Mixed cropping, sequence cropping and intercropping are the types. First one is mixed cropping. If we growing of two or more crops, if we grow two or more crops simultaneously without any fixed row pattern, without any fixed row pattern, for example mustard, oats, barley, और बरसीम, बरसीम भी हो सकती है। All crops are used as fodder purpose for livestock. We take mustard, oat and berseem seed, mix it thoroughly. After mixing, we spread on the field, spread on the field without any row arrangement, without any proper pattern, without any row pattern or row arrangement. That is the type of mixed cropping. That is the example or that is the definition of mixed cropping. जब दो सीड, तीन सीड या फिर कोई भी क्रॉप का आपस में पैटर्न मिक्सिंग हो रखी हुई है, आपस में उलझे हुए हैं, ये देखो, क्लियर? बट इन सम केस देयर इज अ मिक्स। ऐसे होता है जैसे एक रो लगा दी, दूसरी रो लगा दी, तीसरी रो लगा दी, चौथी रो जो है, जैसे ये वीट है, वीट है, ये वीट है, ये मस्टर्ड की लगा दी, ये वीट है, वीट है, वीट है, फिर से मस्टर्ड आ गई। सो ये क्या है, इसमें प्रॉपर रो का अरेंजमेंट और रो का पैटर्न है। इसको, ये एक अलग टाइप है, ये इंटरक्रॉपिंग की टाइप है। ये क्या है, एक इंटरक्रॉपिंग की टाइप है। तो मिक्स क्रॉपिंग में कोई भी पैटर्न नहीं होता क्रॉप्स का, चाहे वो सीड्स को आपस में मिक्स करके करें या कोई भी क्रॉप लगी हुई है उसमें कोई भी रो पैटर्न नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, दैट इज मिक्स क्रॉपिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्रॉप सीड आर मिक्स इन अ प्रोपोर्शन एंड सो ऑन, क्रॉप सीड्स आर मिक्स thoroughly and after mixing we sow on our field. Sowing by broadcasting, as I said earlier, the method in always mixing of seed is broadcasting. Practice in dry land area. Dry land area, why? Yeah, it is a type of intercropping. Practice in dry land region. Why dry land region? Because in dry land region there is a lack of moisture or lack of irrigation facilities. So that's why we grow 2 to 3 crops by mixing of seeds. Because in dryland area, and mixed cropping is mostly used in livestock farming or for fodder purposes. Mostly mixed cropping is of subsistence in nature, that is used for our livestock or that is used for our personal needs. Clear? Next. Next is principle of mixed cropping. What are the principle of mixed cropping? Legume plus non-legume. Legume plus non-legume like berseem, mustard, और बरसीम, ओट्स और यूसरीन प्लस बरसीम and lucine are the legume crop and mustard, oats and barley are non-leguminous crop. For example, अरहर with ज्वार,
gram with wheat, because in that case arhar is a leguminous crop and gram is also a leguminous crop, but wheat and jowar is a cereal crop, non leguminous crop. Next, tall growing plus short growing crop. टोल ग्रोइंग प्लस शॉर्ट ग्रोइंग क्रॉप, जब भी कोई भी दो क्रॉप हम मिक्स करके लगा रहे हैं तो उसमें हमेशा एक क्रॉप जो है उसकी हाइट ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, दोनों एक हाइट पे नहीं होंगे। देन डीप रूटेड क्रॉप्स एंड शैलो रूटेड, दोनों की रूट जो है, मान लो ये क्रॉप लगाई, एक की रूट यहां पर जाएंगी, दूसरे की रूट यहां पर आ जाएगी, दैट इज शैलो रूट, दैट इज टैप रूट और डीप रूट। अगर दोनों की ही ऐसे हो जाती, दोनों की रूट हाइट जो है, रूट डेप्थ जो है वो सेम होती, ये आपस में तो क्या है, ये मिल जाते, तो ग्रोथ नहीं हो पानी थी, तो ग्रोथ नहीं हो पानी थी। तो दैट्स व्हाई डीप रूटेड क्रॉप्स और शैलो रूटेड क्रॉप्स, टॉल ग्रोइंग प्लस शॉर्ट ग्रोइंग, बुशी क्रॉप्स एंड इरेक्ट क्रॉप। एक जो है बुश बनाए, दूसरे जो है इरेक्ट सीधा चले, एक सीधी चलेगी उसके ऊपर दूसरी जो है बुश बनाएगी। एज आई told you in our last session, that is also known as support crop. One crop support the vine crop, the crop which support the vine crop for trailing purposes, that is support crop, as same as bushy crops plus erect growing crops are being mixed to grow on a field by broadcasting method. Crop being attacked by similar insect pest disease should not be sown together. इसीलिए तो लेग्यूम प्लस नॉन लेग्यूम लगाए थे, क्योंकि लेग्यूम्स के डिजीज और पेस्ट अलग हैं, नॉन लेग्यूम के डिजीज और पेस्ट अलग हैं, प्लस लेग्यूम जो है नोड्यूल होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, तो ये नाइट्रोजन जो है इसको देगी। क्लियर? मिक्स शुड कंसिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। मींस टू से ग्रोथ हैबिट, इन कंक्लूजन growth habit of crops sown as mixed cropping are different, should be different. तो जो भी क्रॉप्स हम मिक्स क्रॉपिंग में लगा रहे हैं उनकी ग्रोथ की हैबिट जो है, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो उनकी हाइट हो, चाहे वो उसके पेस्ट हो, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनके जो है ड्यूरेशन हो, तो वो चेंज होनी चाहिए, सेम नहीं ग्रोथ हैबिट। क्लियर? नेक्स्ट, advantage, that is less risk failure if we grow to different crops of different family with different duration, so less attack of pest and disease and less risk failure. risk failure means तीन क्रॉप लगा रखी हैं, मान लो तीन क्रॉप लगा रखी हैं, एक क्रॉप का पेस्ट जो है एंडेमिक हो गया, एकदम से बढ़ गया, हा? तो एक क्रॉप खराब हो जाएगी, हमारी दो क्रॉप तो बच जाएंगी, तो रिस्क जो है कम कर देंगे। फुलफिल द डेली रिक्वायरमेंट, improve fertility because we are growing leguminous crop with cereal, that's how they improve fertility of soil. Better distribution of labor, increase monetary return because we are growing 2 to 3 crops on a same piece of land, so our return will increase. Well balanced cattle feed, because of mostly mixed cropping is used for the livestock purposes or for fodder purposes, so that's why well balanced cattle feed should be maintained. Safeguard against pest and disease, as I explained you earlier, high resource use efficiency, high resource use efficiency. But what are the disadvantage? Control of pest disease and weed become difficult. Why? Because of interculture operation. Interculture operation are those operation which are given ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप, जो भी हम खड़ी फसल के अंदर, स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर कोई भी चल फिर रहे हैं, है ना, तो अब ये मिक्सिंग में लगे हुए हैं, बीच में रास्ता ही नहीं है, तो इसमें हम जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर पेस्ट डिजीज या फिर वीड का अटैक हो जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल है। सपोज अगर यहाँ पर दो रोज हैं, इसके बीच में वीड्स आ जाए, पौधे उग जाए, अनवांटेड प्लांट्स आ जाए, तो हम यहाँ पर क्या है, इसको जैसे निकाल सकते हैं। बट अगर सीड ऐसे लगे हुए हैं विदाउट एनी पैटर्न इन लाइक मिक्स क्रॉपिंग, इसमें से वीड्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चुन चुन के निकालना मुश्किल। क्लियर? लेबर इंटेंसिव, लेस यूज ऑफ मशीनरी, इसमें हम जो है मशीन लेबर, इसमें लेबर कॉस्ट जो है वो ज्यादा रहेगी, बिकॉज आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सीड ऑल द इंटरकल्चर ऑपरेशन आर गिवन बाय लेबर, इसमें हम मशीन जो है कम यूज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द
mixed cropping. Next one is intercropping. Next one is intercropping. What is intercropping? Growing of two or more crops simultaneously on the same piece of land in definite row and pattern. Definite row and pattern. For example, Setaria plus red gram. I am giving you one example more, like wheat and mustard. Most important example, wheat plus mustard. Wheat है, one is mustard. Then after wheat, most important, wheat and mustard are used as intercropping cultivation. Wheat, mustard, and the pattern is 9:1. 9 rows of wheat and 1 row of mustard. There is a different type of intercropping that is based on plant population or based on arrangement. Based on plant population or based on arrangement. Based on plant population, there is a two type: additive and replacement. Additive and replacement. As the name suggests, additive means in addition. Replacement means replace कर देना. Replacement mean किसी चीज को replace कर देना. Suppose यहाँ पर क्या था, ये wheat लग रही, wheat. अगर हमने इसी के अंदर एक रो, पैटर्न यही है, ये वैसी मतलब इसकी जो है स्पेसिंग हमने 25 सेंटीमीटर की रखनी थी, तो स्पेसिंग वही है, बट इसी के अंदर हमने जो है एक जो है मस्टर्ड की लाइन जो है ऐड कर दी. दैट इज additive intercropping. That is additive in addition. Additive intercropping. But twenty-five centimeter, 25 centimeter, and in next 25 centimeter, it is a mustard crop. There is one row of our mustard crop. So we replace one row of our crop with another crop. That is replacement intercropping. That is replacement intercropping. Clear? Based on the number of plant additive series means, example, wheat and mustard in a 10:1. Means 10 rows of wheat with 1 row of mustard. That is additive. In replacement series, castor and red gram, 1 row of castor, 1 row of red gram, 1 row of castor, 1 row of red gram. So in that case, next castor row is replaced by red gram. That is replacement series. सपोज मान लो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात में, आसान भाषा में समझो कि अगर हमने किसी भी क्रॉप की जगह कोई क्रॉप और लगा दी, किसी एक रो की जगह कोई और क्रॉप लगा दी जो अगली रो आनी चाहिए थी, दैट इज रिप्लेसमेंट. बट हमने रोज वैसी रखी, जो बीच में उसकी स्पेस बचती है उसके अंदर एक और कोई क्रॉप लगा दी, दैट इज एडिटिव सीरीज. क्लियर? तो एडिटिव सीरीज में प्लांट पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा होगी, रिप्लेसमेंट में उतनी रह सकती है, उससे थोड़ी सी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है. क्लियर? नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप. बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप, फर्स्ट वन इज, ये यहां पर नहीं है तो इसलिए साथ में लिख लेना. इंटरक्रॉपिंग में क्या है, ये हम जो कर रहे हैं रो इंटरक्रॉपिंग, दैट इज रो इंटरक्रॉपिंग. सेकंड वन इज, यहां पर हमने व्हीट लगा दिया, यहां पर हमने बार्ले, यहां पर हमने फिर से व्हीट. मतलब यहां पर व्हीट की काफी सारी रोज हैं, यहां पर बार्ले की काफी सारी रोज हैं, यहां पर फिर से व्हीट की काफी सारी रोज हैं. दैट इज नोन एज पैच इंटरक्रॉपिंग. पैच इंटरक्रॉपिंग. पैच इंटरक्रॉपिंग.
Clear? Row intercropping, patch intercropping. Next one is, it is basically a type on the arrangement of crops. Type of intercropping based on the arrangement of crop. First one is multi-storied. Multi-story means हम कहते हैं ना डबल स्टोरी बिल्डिंग, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग, है ना. तो बेसिकली मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग क्या है? Growing of plant crops according to their heights or according to their difference in height. That is known as multi-story cropping. Mostly used in coconut and vegetable crops. Because coconut is a tall tree, vegetable are clear. So growing plant of different height in the same field of same time. Example, eucalyptus, papaya and berseem growing together. Because of eucalyptus having different height, papaya is smaller than eucalyptus and berseem is smaller than papaya. So basically it is a eucalyptus, then it is a papaya, then it is a berseem. Again, here is the eucalyptus again. It is known as multi-storied. It is known as multi-storied cropping. Next one is synergistic cropping. Synergistic cropping are those crops growing together which increase the yield of the one crop or increase the yield of each crop. For example, here the yield of the both crops grown together are found to be higher than the yield of the pure crop. What is pure crop? What is pure crop? If we are growing one single crop like wheat on our field, that is pure crop or sole crop. Pure crop or sole crop. But if we are growing wheat and then barley, that is not a sole crop. That is a type of intercrop. So in synergistic crops, those crops are grown together which increase the yield of each crop. आपस में एक दूसरे को क्या है बेनिफिट कर रही हैं. That is synergistic cropping and it is a type of intercropping. Examples are sugarcane and potato. Sugarcane and potato. Sugarcane and potato. Reason to practice intercropping. Why we are practicing intercropping? Because the first one is risk. Risk reduction. एक क्रॉप खराब होगी दूसरी चलेगी, दूसरी खराब होगी पहली चल सकती है, पहली खराब होगी दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी चल जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी increase. Productivity increases because of mostly we use legume crops with cereals as an intercrop. So that's why productivity increase. Pest and disease. Or proper utilization of resources occur. That's the reason that we are practicing intercropping. But what are the principle of intercropping? What are the principle of intercropping? क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं? दोनों की सेम, वैसे दोनों की रूट्स जो हैं वो सिमिलर डेप्थ पे नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन द डेप्थ ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स. नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग हैबिट. ग्रोइंग हैबिट उनकी दोनों की अलग होनी चाहिए. अगर एक जो है लंबी जा रही है दूसरी छोटी रही. थर्ड वन इज ड्यूरेशन. दोनों की ड्यूरेशन एक जैसी नहीं होनी चाहिए. दोनों की जो है मान लो क्योंकि बिकॉज ऑफ मोस्टली द क्रॉप्स यूज रिसोर्सेज इन रिप्रोडक्शन स्टेज. तो दोनों की रिप्रोडक्शन स्टेज एक ही टाइम पर नहीं आनी चाहिए. अगर दोनों की एक ही टाइम पर आ गई तो दोनों आपस में कंपीट करेंगे. ठीक है. तो जो भी क्रॉप्स हम लगा रहे हैं वो आपस में बेनिफिट करें. The crop should be benefited to each other. कंपटीशन नहीं होना चाहिए दोनों का. There should be no competition in intercropping system. The component crop should have different root depth. The standard plant population of main crop should be maintained.
प्लांटिंग मेथड एंड मैनेजमेंट शुड बी सिंपल। क्लियर? प्रिंसिपल क्या है? एक तो सिंपल, मैं सिंपल से बता रहा हूं, एक तो क्या है कि हमारे जो क्रॉप्स हैं उनकी हैबिट चेंज होनी चाहिए, दोनों की ग्रोइंग हैबिट चेंज होनी चाहिए, रूटिंग डेप्थ चेंज होनी चाहिए, फ्लावरिंग टाइम सेम नहीं होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव टाइम सेम नहीं होना चाहिए, हाइट सेम नहीं होनी चाहिए, रूट की डेप्थ बिल्कुल भी सेम नहीं होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, कंपीट ना करें। तो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ इंटरक्रॉपिंग। ये हम कर चुके हैं बात इंटरक्रॉपिंग। बट व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग? इफ वी ग्रो सीरियल क्रॉप विद सीरियल, if we grow cereal crop as an intercrop in cereal crop, then fertility reduces and we need to provide more fertilizer, and interculture operation are different. Interculture operation become difficult, and there is also difficulty to harvest the whole crop or our main crop because of the crop दोनों एक टाइम, एक हार्वेस्ट होने वाली है, दूसरी अभी तक हुई, अभी 1 महीना लगेगा, तो पहली को हार्वेस्ट कैसे करेंगे? मैनुअल मीन से करना पड़ेगा, बीच में कंबाइन या फिर कोई भी मशीन वगैरह नहीं हम, ठीक है। इफ वी ग्रो टू सिमिलर क्रॉप, टू क्रॉप्स विद सेम फैमिली क्रॉप, देन इंसेक्ट पेस्ट अटैक मैनेजमेंट कम डिफिकल्ट। So it is difficult to manage insect pest in our field if we grow two crops with the same family or same growing habit. Clear? Next one is sequence cropping. As I said you earlier, that growing of two or more crops in a sequence means to say growing of one crop after the harvesting of other crop in one farming year. It is known as sequence crop. If we grow two crops, that is double cropping. If we grow three crops, that is triple cropping. If we grow four crops, that is quadruple cropping. Clear? Next type of sequence cropping, that is LA cropping, relay cropping and ratoon cropping. What is LA cropping? What is LA cropping? LA cropping means in LA means जो रास्ते बीच में बने हुए हैं, growing of crops in between the LA of two crops. That is, मान लो यहाँ पर जो LA है, यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके बीच में जो रास्ते हैं, तो बीच में रोड बनी हुई है, वहां पर हमने क्या है? क्रॉप लगानी है। We grow crop or vacant space between LA or between LA of two different LA of one crop, we grow another crop between the LA. That is known as LA cropping. Relay cropping, as I said you earlier, that if we grow one crop before the harvesting of another crop, clear? If we grow one crop before the harvesting of another crop, then it is known as relay cropping, means to say overlap. Harvesting of one crop overlap with the sowing of another crop. That is known as relay cropping. Then what is ratoon cropping? What is ratoon cropping? Ratoon cropping means in sugarcane. Mostly ratoon cropping is occurring in sugarcane, sorghum, maize. In sugarcane, that is sugarcane crop. Clear? That is soil level. We harvest this crop, this sugarcane, from the bottom of, from the base of the stem. After that, some stubble remain on the, इसका कुछ स्ट्रबल जो है वो यहाँ पर मिट्टी के अंदर पड़ा होगा। आफ्टर हार्वेस्टिंग ये स्ट्रबल फिर से क्या करेगा? स्प्राउट करेगा, और नियरली टेक 9 to 10 months फिर से ये द्वारा यही स्प्राउट जो है फिर से जो है शुगर केन बन जाएगा। दैट इज नोन एज रटून क्रॉपिंग। दैट इज नोन एज रटून क्रॉपिंग। क्लियर?
What is relay cropping? Relay cropping, planting of succeeding crop before the harvesting of the preceding crop, that is paddy lathyrus, paddy lucerne, paddy berseem, cotton berseem. If paddy is harvested in 25th of October and lathyrus will be planted in 20th of October, then it is a relay cropping. Then it is an example of relay cropping. Clear? Next, advantage and disadvantage. What are the advantage? Better utilization residual moisture and fertilizer. मैंने पहले बताया, मान लो हमने पहले पैडी लगा रखी थी, पैडी में इरिगेशन सबसे ज्यादा देनी पड़ती है, तो इन पैडी क्रॉप इरिगेशन हमने दी, बहुत ज्यादा पानी दिया, अब जो उसका पानी बचा हुआ है उसी के ऊपर, क्योंकि मान लो हमने पैडी के बाद वीट लगानी है, तो पैडी को हार्वेस्ट करके if we want to sow wheat crop after paddy, then we need one pre-sowing irrigation to prepare the land, to prepare our field. But in case of relay cropping, we do not need any irrigation before the sowing of wheat, or we do not require any preparatory tillage. That's how we reduce our tillage operation, that's how we reduce our irrigation operation, and that's how we use our resources in only one field, and that's how we use our fertilizer proper. So these all are the advantages of relay cropping. Reduce the cost of cultivation practices, reduce the cost of fertilizer and irrigation, labor requirement is less because we need less labor or no labor in sowing of next crop, because we are growing on the standing crop, we are sowing on the standing crop, so there is no need to prepare our field for the sowing. So reduce the pest and disease incident. What are the disadvantages? Risk of crop failure is more because of germination. जब ऐसे करेंगे हमारी जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी, तो बीज से जर्मिनेट करना है, सीड ने जर्मिनेट करना है, वो कम होगा, रिड्यूस होगा. हार्वेस्टिंग बाय मशीनरी इज डिफिकल्ट, हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट हो जाएगी. लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है. ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज. देखो, इंसिडेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज वीड इज लेस ड्यू टू अर्ली सोइंग ऑपरेशन. एक जगह पर वही इसकी डिसएडवांटेज, ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ पेस्ट डिजीज एंड वीड. इट्स डिपेंड अपॉन which crops are being used as an relay cropping. Clear? What is ratoon cropping? Raise a crop with the regrowth coming out of root or stalk after the harvest of crop. एक स्टबल से फिर से बार बार वो स्प्राउट हो रहा है, काटा, फिर से ये बचा, फिर से ये स्प्राउट हो गया. That is known as ratoon crop, or it is mostly occur in sugarcane, ज्वार, बाजरा, breadcrumb or sorghum or berseem. Mostly ratooning is occur in the fodder crops. बार बार हम तभी लेते हैं जब हमें fodder crop चाहिए हो, और नहीं तो sugarcane के अंदर. But it is best to take a ratoon crop only once in sugarcane to get higher yield. In second ratooning, yield of the sugarcane reduces drastically. Clear? Next one is LA cropping. What is LA cropping? The system of growing jawar, maize, bajra or any other arable crop in LA of legume shrubs, like as I said you earlier, these are LA means रास्ते. ये दो क्रॉप्स के बीच में जो रास्ता बचा है वहां पर अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं, that is LA cropping. Easy peasy. That is LA. If we are growing food come fodder system, that means on this side we grow food and in between we grow fodder crop. यहाँ पर फिर से फूड लगाया बट बीच में हमने मल्च क्रॉप लगा दिया. यहाँ पर फिर से दो क्रॉप फूड की हैं और दो लाइन, और बीच में जो है हमने पोर सिस्टम कर दिया. तो दैट इज टाइप ऑफ LA cropping. That is type of LA cropping. Clear? Next. Then what is contingency cropping? What is contingency cropping? Contingency cropping means it is our third type of cropping system.
Thank you. See, what is contingency cropping? Contingency cropping means growing of suitable crop in place of normal growing crop. जो हम बार बार क्रॉप्स लगाते आ रहे हैं उसको चेंज करना, उसको चेंज करना बिकॉज ऑफ आवर क्लाइमेट चेंज और बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल अकर एज वी एक्सपेक्टेड, बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल और क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट इज जो है एकदम से हमारे जो एक्सपेक्ट किया था हमने, जो हमने सोचा था कि इस तरह से हम क्रॉप लगाएंगे और ये क्लाइमेट रहेगा, बट रेनफॉल उतनी हुई नहीं, तो उस चेंज में हम क्या करते हैं, अपना सिस्टम जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपना पैटर्न जो है वो चेंज करते हैं, बट उसकी वजह से हमारा जो ईल्ड है वो कम हो जाता है, ईल्ड जो है वो कम हो जाता है। तो दिस सिस्टम इज नोन एज कंटिंजेंसी, दिस क्रॉपिंग सिस्टम इज नोन एज कंटिंजेंसी क्रॉपिंग। Clear? Next one is companion crop. In our next class, we will discuss the what is companion cropping, what are the type of companion cropping, that's all, and what are farming system, cropping system, difference between farming system and cropping system. Clear? Hope you like the lecture. समझ आई राजे? Do like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you so much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.